Aziz Ahmed here again on 21st January 2026. आज हम बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में, क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर बातचीत हुई है और एक हमारे बड़े रेनाउंड वीलॉगर ने ये कहा कि मार्च के अंदर ये हो सकता है। नहीं, मार्च में नहीं हो सकता, ये हो सकता है आफ्टर द नवंबर इलेक्शंस। आपको ये याद रखना चाहिए कि एवरी 2 years अमेरिका के अंदर द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर एक इलेक्शंस होते हैं। 4 साल के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होता है और कांग्रेस के भी इलेक्शंस होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे है जैसे हमारा कौमी असेंबली, उसकी टोटल सीट्स हैं 435, वो सारी की सारी इलेक्शंस में जाती हैं। और सेनेट की हैं टोटल सीट 100, जिसके इलेक्शंस 1/3 इलेक्शंस एवरी 2 years होते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पार्टी है, उसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीट्स हैं टोटल 218 और डेमोक्रेटिक पार्टी की है 213। इसके मुकाबले में सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 53 सीट हैं और डेमोक्रेट्स के 45 सीट्स हैं, मगर 2 इंडिपेंडेंट हैं जो डेमोक्रेट्स के साथ मिलके वोट करते हैं, कॉकस करते हैं अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और इम्पीचमेंट के लिए सेनेट के अंदर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अब तक अमेरिकन हिस्ट्री में सिर्फ 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को इम्पीचमेंट का सामना हुआ है। सबसे पहले एंड्रू जैक्सन 1868 में एक सेक्रेटरी ऑफ वॉर को डिसमिस करने के लिए हुआ था, क्योंकि उस वक्त किसी भी सेक्रेटरी का मतलब हुआ काबीना का मेंबर को डिसमिस करने के लिए कोई कवानीन थे जो बाद में बदल दिए गए, और 1868 में उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर को हटाने के लिए कोई एक कोशिश की, जिसके नतीजे में उसको इम्पीचमेंट का प्रोसेस का सामना करना पड़ा, मगर इम्पीचमेंट नहीं हुई। सेकंड इम्पीचमेंट हुई 1998 में सदर बिल क्लिंटन की। वो आपको याद होगा, एक फेमस मोनिका लेविंस्की के साथ उनका कोई स्कैंडल था, उसके बारे में। उसके अलावा एक कोई पॉला जोन्स थी, उसके बारे में कोई कांग्रेशनल टेस्ट में झूठ बोलने के ऊपर उनका इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू किया गया, जो कि बाद में वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारे बुली ट्रम्प जो हैं, इनको 2 दफ़ा इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ। एक दफ़ा जब वो पावर में थे और एक दफ़ा जब वो पावर से बाहर हो गए। एक दफ़ा 2019 में उनको इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ इनके साथ, जो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होकर सेनेट में ऑफकोर्स 2/3 मेजॉरिटी में नहीं हो सका। वो था फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और कोई और एक और किसी चीज़ के लिए। और दूसरा जो उनके साथ हुआ वो 2021 में हुआ, जबकि उन्होंने पावर में आने के बाद, पावर छोड़ने के बाद, जो उस दिन वोट टेकिंग सेरेमनी थी जो बाइडन की, उसके अंदर एक इंसरेक्शन किया गया, उधर कांग्रेस के ऊपर हमला किया गया। उसके बारे में ट्रम्प के बारे में एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ। There was something icky about pursuing this. There was no dignity here from anybody. Prosecutors emphasize the real issue here is not sex, but the president allegedly subverting the legal system by getting others to lie and obstructing justice. The evidence suggests that the president repeatedly tried to thwart the legal process in the Jones matter. The Constitution says that a president can be impeached for high crimes and misdemeanors, but the Constitution does not define what those terms mean. So they're up to Congress to define. I do not think that unless these misconduct raised to the level of an assault on our fundamental political system, that they're impeachable, even if every one of them is true.
This was not an impeachable offense. It's very painful, it's very embarrassing. It has nothing to do with the running of the government. There were a number of Republicans who knew that this was all nonsense, but they were going to go along because they were being forced by the party. History unfolding in the nation's capital today as a somber House of Representatives voted for only the second time in American history to impeach a president of the United States. After a lifetime of striving for a celebrated rank among American presidents, this diligent student of history was handed his place today, one he did not want but can never give back. I want the American people to know today that I am still committed to working with people of good faith and goodwill of both parties to do what's best for our country. It's what I've tried to do for 6 years. It's what I intend to do for 2 more until the last hour of the last day of my term. It was up to the House to decide whether there was grounds to impeach the president, and then it is up to the Senate to conduct the trial and act as essentially the jury. The said William Jefferson Clinton be, and he hereby is, acquitted of the charges in the said articles. In 2019, evidence emerged that Trump had supposedly withheld aid to the Eastern European country of Ukraine in an attempt to get them to provide damaging information on one of his political rivals. This angered many members of Congress. On December 18, 2019, the House of Representatives voted to impeach Trump, or officially charge him with misconduct in office. The 2 charges, called articles of impeachment, were abuse of power and obstruction of Congress, or blocking Congress from doing their job properly. The Senate then held a trial to decide if Trump should be removed from office. After nearly 3 weeks, the Senate voted to let the president remain in office. Washington Democrats made up their minds to impeach President Trump before he was even inaugurated. Donald Trump is a living, breathing, impeachable offense. Donald Trump is facing an impeachment trial again. No president has ever been impeached twice, and no president has ever gone on trial after leaving office. It's fair to say we're in pretty uncharted territory. So what's the case against him? Donald Trump is accused of inciting violence against the government. Specifically this, the storming of Congress by thousands of his supporters. But his accusers say you have to go back a couple of months to last November's presidential election. We know there was massive fraud. That was a rigged election. If you count the legal votes, I easily win. Trump lost, but refused to admit it. Not only that, but when the state of Georgia was getting ready to hold a second round of voting to settle 2 very close Senate races, Mr. Trump is accused of trying to intervene illegally. I only need 11,000 votes. Fellas, I need 11,000 votes. Give me a break. It all came to a head on January the 6th, when Congress was due to confirm the results of the presidential election. In a long, bitter speech, Mr. Trump railed against the entire election process. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Within minutes of him finishing, some of his supporters were breaking into the Capitol building. But did the president actually incite violence? America's First Amendment, which protects freedom of speech, gives Mr. Trump lots of leeway to say pretty much whatever he wants, short of ordering his supporters to storm the Capitol, which he did not do. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. It'll be up to the Senate's 100 members to decide if Mr. Trump is guilty or not, and the Democrats will need at least 17 Republicans to join them to get a conviction. It's a really tall order. Most Republicans think the trial shouldn't even be happening. This proceeding we are about to enter is unconstitutional. But what if it does go against him? Well, then Donald Trump will be the first president to be impeached and convicted. He'd almost certainly be barred from ever running for public office again, and he could lose his presidential pension and perks. But what if he wins? The Democrats could still try and find some other way to punish the former president, but to survive impeachment twice in a year would, in the eyes of Mr. Trump's loyal base, represent another victory against an establishment that's just out to get him. A useful platform, perhaps, on which to launch another presidential bid.
अमरीकी तारीख में एक ही सदर ने इस्तीफ़ा दिया जब उनके वाटरगेट स्कैंडल के अंदर रिचर्ड निक्सन का ये पता चल गया था कि वो इम्पीच हो जाएगा कांग्रेस के ज़रिए और प्रेस के ज़रिए। वो बहुत ही उसके जो उसने क्रिमिनल ऑफेंसेस किए थे वाटरगेट स्कैंडल के अंदर, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी हेडक्वार्टर्स वाटरगेट कॉम्प्लेक्स वाशिंगटन डीसी में था, उसके अंदर उसने वो लगाए थे डिवाइसेस लगाए थे टू रिकॉर्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन एट द डेमोक्रेटिक हेडक्वार्टर्स। तो और उसके जो वो थे एड्स थे लिकमन हॉल्डमन, उसने कांग्रेस के अंदर जाकर ये टेस्टिमनी भी दे दी थी कि निक्सन इन क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो उसको 8 अगस्त 1974 के अंदर वो रिज़ाइन करके अमेरिकन प्रेसिडेंट सीट छोड़ के गया और उसके बाद जेरल्ड फोर्ड ने टेक ओवर किया और अगले रोज़ निक्सन को फुल एंड फाइनल पार्डन ऑन द वाटरगेट क्राइम्स दिया, जिससे उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस और ट्रायल नहीं चला। निक्सन की ट्रायल निक्सन से का जो इससे पहले जेरल्ड फोर्ड से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट था वो स्पायरो एग्न्यू था, स्पायरो टी एग्न्यू, और वो भी एक तरीके से क्रिमिनल था और उसको टैक्स एवेजन के मामले में रिज़ाइन करना पड़ा और $1,00,000 का फ़ाइन भी हुआ। कोई उसको वो जेल टर्म नहीं हुई क्योंकि ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट। कोर्ट्स ने थोड़ा सा उसको हल्का हाथ रखा, मगर ही वॉज अ क्रिमिनल ऑफ द वर्स्ट सॉर्ट ऑल्सो। तो स्पायरो टी एग्न्यू एंड रिचर्ड निक्सन जो 1972 के अंदर अमेरिकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, were the worst sort of criminals in American history in political terms. Good evening. This is the 37th time I have spoken to you from this office, where so many decisions have been made that shape the history of this nation. Each time I have done so to discuss with you some matter that I believe affected the national interest. In all the decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. As long as there was such a base, I felt strongly that it was necessary to see the constitutional process through to its conclusion, that to do otherwise would be unfaithful to the spirit of that deliberately difficult process and a dangerously destabilizing precedent for the future. But with the disappearance of that base, I now believe that the constitutional purpose has been served, and there is no longer a need for the process to be prolonged. I would have preferred to carry through to the finish, whatever the personal agony it would have involved. And my family unanimously urged me to do so. But the interests of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress
particularly at this time with problems we face at home and abroad, to continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. تو امریکن ہسٹری کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکن پریسیڈنٹس کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے میں لایا گیا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ جو پاگل پن مچایا ہوا ہے امریکہ کے اندر، اور کبھی گرین لینڈ، کبھی ایران، کبھی یہ ڈیل، کبھی وہ ڈیل، کبھی اس کے اوپر ٹیرفس، اور یہ ساری باتیں، کبھی نوبیل پرائز کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ مجھے نوبیل پرائز نہیں ملا تو اب میں پیس پریسیڈنٹ نہیں ہوں، میں جو بھی کرنا چاہوں گا کروں گا. تو بالکل پاگل پن کے زمرے میں آ گیا ہے. تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مڈ ٹرم الیکشنز جو نومبر کے اندر the first Tuesday of this year جو الیکشنز ہوں گے، تو he is fearing کہ he will be impeached after the November elections. دیکھیں تاریخ کس طرف لے کے جاتی ہے اس معاملے کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تاریخ اور امریکن پولیٹیکل پروسیس کس طریقے سے پیش ہوتی ہے.